Assalamu alaikum. My name is Yasmina and I am the CEO of Muslim Matrimonial. Welcome back to my show, Khubsurat Rishte. Well, as you all know, जिन्होंने मेरी प्रोग्राम पहले देखा है कि मैं इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. एक है बिफोर मैरिज, सेकेंड है आफ्टर मैरिज एंड द थर्ड इज कि हम कोई स्कॉलर्स या कम्युनिटी के मेंबर्स को इनवाइट करते हैं या तो टेलीफोन पे या एज पर्सनल गेस्ट. फिर हम एक किताब लेते हैं और जिसको हम डिस्कस करते हैं. सो कमिंग बैक टू दैट, आई एम गोइंग टू डिवाइड माय शो इनटू 3 पार्ट्स अगेन. लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, हमने इस्तिखारा पे कॉन्सेंट्रेट किया था और इस्तिखारा के बारे में डिस्कशंस की थी. नाउ हमने ऑल्सो डिस्कस किया था एंगेजमेंट के बारे में या मंगनी के बारे में, और हमने डिस्कस की थी कि एक्सचेंज ऑफ रिंग्स, इज इट अलाउड इन इस्लाम और नॉट, इज इट अ पार्ट ऑफ शरिया, ये हमने डिस्कस किया था. फिर हम गए थे लिटिल फर्दर एंड हमने डिस्कस किया था एटिकेट्स ऑफ मैरिज. ना मैंने जिस पॉइंट से डिस्कस किया था इस टॉपिक को वो ये था कि अगर कोई एक गेस्ट बन के जा रहा है किसी के इनविटेशन पे, एक निकाह पे, तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे, आप किस तरह से ड्रेस करेंगे और उस मौके को एक बेहतरीन मौका बना देंगे जिनकी शादी हो रही है उनके लिए और गेस्ट के लिए, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ देम ऑन दैट इन्विटेशन. आज जिस टॉपिक की मैं बात करने वाली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर मैरिज एंड दैट इज योर वेडिंग नाइट. तो इस टॉपिक को हम बहुत लाइट रखेंगे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज इतने सारे लोग बार बार आके मेरे को पूछते हैं कि सिस्टर यास्मीन, ये वेडिंग नाइट जो होता है जिसको हम सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप लेके कनेक्ट कर लेते हैं, और जनरली कम्युनिटीज में ये बात होती है कि वो इतनी अहमियत दी जाती है उस फिजिकल नाइट पे कि वेडिंग नाइट लोग सिर्फ इसी को लेके चलते हैं, बट इसमें इस्लामिकली बहुत बड़ी वैल्यू है इस वेडिंग नाइट में. एंड ऑफ कोर्स ये मैरिज प्रिपरेशन में हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं हम मुसलमानों ने. तो मैं आज जो कवर करूंगी पॉइंट्स है कि अगर इंसान अपनी वेडिंग नाइट की तैयारी कर रहा है तो लड़का भी बहुत स्ट्रेस्ड होता है, वो लड़की जिनसे उनकी निकाह हो रही है वो भी बहुत स्ट्रेस्ड होती है. तो व्हेन दे आर गोइंग टू कंज्यूम देयर मैरिज, मतलब कि ये फिजिकल रिलेशनशिप में बाउंड होने वाले हो, उससे पहले आप क्या करेंगे. अब समझो कि आपका निकाह हो गया, यू आर नाउ ऑफिशियली मैरिड टू दिस पर्सन, आपका निकाह हो गया, you are now alone with your bride in the room and you are going to consummate your marriage. Now इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो अल्हम्दुलिल्लाह and inshallah may Allah make it easy on all of us, it will make this process of physical relationship more easy on you. First point ये है कि जब एक मर्द एक औरत को अप्रोच करता है, he has to make her relax. तो first point, write it down if you need to, बिकॉज मैं जब भी बोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रिसर्च करके आती हूँ अपनी टॉपिक पे, ताकि लोग जब यहाँ पे मेरे इस वीडियो को सुने तो दे फील दैट दे आर लिसनिंग टू अ कंटेंट बेस्ड डिस्कशन. बिकॉज व्हेन अ पर्सन स्पीक्स, that person has to add value in the other person's life. ये मेरी सोच है कि जब भी मैं कुछ बताऊं आपको, ये बहुत जरूरी है कि मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं. तो कीपिंग दैट इन माइंड, ये मर्द और औरतों का रिश्ता बहुत बहुत नाजुक रिश्ता होता है, तो इसमें बहुत जरूरी है कि जो लड़की होती है वो बहुत नर्वस होती है अपने वेडिंग नाइट के लिए, तो ये हक है उस मर्द का कि अपनी वाइफ को रिलैक्स करें. तो वो किस तरह से रिलैक्स करेगा, उसके लिए कोई ड्रिंक लेके आना, उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आना. जैसा कि पहले के दिनों में दे यूज्ड टू सर्व मिल्क एंड फ्रूट्स टू द हस्बैंड एंड वाइफ, ताकि वो एक ईज हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप में. अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट. कुछ हदीसें हैं जिसको मैंने पढ़े हैं और मैंने देखा है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही अपनाया था. तो इसलिए ट्रेडिशंस हैव कम इनटू द सिस्टम वेयर मिल्क इज गिवन टू द कपल टू मेक देम रिलैक्स इन द रिलेशनशिप. इसमें वो रिलैक्स हो जाते हैं. और फिर if you're a young couple, alhamdulillah, you know what, have a nice discussion with your wife. बातचीत, कम्युनिकेट करो एक दूसरे से, डजेंट मैटर जितना टाइम लगे, एक दूसरे के कंपेनियनशिप में कंफर्टेबल हो जाओ, एंड देन यू मूव ऑन टू द फिजिकल डिजायर्स. सो वन इज, रिमेंबर, always offer
your wife something to eat, to drink, or give her a gift so that you can add relaxation into that part of your life. Alhamdulillah. Let's move on to the second part. And this is related to the hadith of the Prophet. Always place a hand on the head of your wife and say a dua. So if you do a little bit of research on that, हमारे Prophet ने भी यही किया था. Always important कि अपनी wife के सर पे हाथ रखें और दुआ मांगे अल्लाह से. दुआ ये होती है कि this was practiced by our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and there is a hadith related to that. The third point that I would say is very, very important. कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि आपके इस रिलेशनशिप से शैतान को दूर रखें, बिकॉज शैतान हैज टू प्ले हैवॉक इन योर रिलेशनशिप. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि शैतान इज नॉट हैप्पी व्हेन 2 पीपल कम टुगेदर. शैतान is always looking, वो चाहता है कि हमारे रिश्ते टूटे, बिकॉज जब आप हलाल रिलेशनशिप में आते हो तो आप अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हो, और शैतान चाहता है कि आपके रिश्ते मजबूत ना हो. वो यही चाहता है कि आपके रिश्ते हराम की तरफ जाए. That's the reason he stops you from getting into a beautiful relationship like marriage. And it is my advice to the younger generation to come out of this haram relationships, get into a beautiful halal relationship with a woman that you love or that you propose to, and alhamdulillah, Allah will bless you with beautiful children in your relationship. So now is my third point, which says it is all on your niyyah. Have a intention when you get married that alhamdulillah, may Allah bless you both with beautiful children from this relationship. Now seeking, as I said, शैतान से दूर रहना अपने रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है. नियत करना, सही नियत करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट रिमेंबर द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ये हाइजीन से रिलेटेड है, अपनी क्लेनलीनेस से. वो बोलते हैं ना, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. इस्लाम आपको सिखाता है कि आपकी सफाई, जिस्म की सफाई, जैसा दिमागी सफाई इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह से आपके जिस्म की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपकी जब वेडिंग नाइट होती है, आप थके हो, यू आर नॉट फ्रेश, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका माउथ इज क्लीन एंड रिंस्ड. उसमें से बिरयानी या आपने जो खाया उसकी स्मेल नहीं हो. बिकॉज जब आप अपनी वाइफ को अप्रोच करते हो या वाइफ आपको, आप दोनों मिलकर जब एक दूसरे को अप्रोच करते हो, तो यू शुड हैव एंड you should smell good. So the first part that you need to keep clean is your mouth and smell good for your companion. And of course, मैं सिर्फ मर्दों के लिए बात नहीं बोल रही हूँ, औरतों के लिए भी यही बोल रही हूँ कि make sure your mouth is clean and rinsed. And remember, our Prophet always used to do that. Whenever he came into the room, he would always have miswak in his mouth so that his mouth smelled good. Because जो मुंह की बदबू होती है वो बहुत बुरी होती है. तो make sure that your mouth smells good. Even when you're talking to people, it is a basic attitude कि आपके स्मेल, आपके माउथ की स्मेल अच्छी हो. It is a very important part of your cleanliness. अब फॉर एग्जाम्पल आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये सब फॉलो कर लिया मेरी पॉइंट्स, यू आर गुड टू गो. आपने अपने फिजिकल रिलेशनशिप भी अपने वाइफ के साथ कर लिए, आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. द फिजिकल रिलेशनशिप इज कंप्लीटेड. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ मैन ऑल्सो टू मेक श्योर कि आप अपनी वाइफ के जो डिजायर्स है वो भी फुलफिल करें. So it is very important that not only should you be satisfied with the physical relationship, please make sure that you nurture your wife also. You fulfill her desires also, because this is a part of your ibadat. It's a part of your worship. Now many a times ऐसा भी होता है कि मर्द खुद satisfy हो जाता है लेकिन उठ के निकल जाता है अपनी बेड से. So please, it is not just being in a sexual relationship or a physical relationship. Please make sure that you take care of your wife, because she is here now looking for fulfillment of her desires. उनकी जो उम्मीदें हैं will be completed through you. तो inshallah, may Allah give all of us hidayah that we take care of all our physical relationships through this beautiful relationship of marriage.
Now, ये जो sexual relationship जो हमने बात की है या physical relationship की, and we talked about it as being an act of worship. Please remember, इससे आपको सवाब भी मिलता है. तो अल्लाह सुब्हान ताला जितना बोलते हैं कि in haram relationship it is a guna, he also says कि ये जो relationship है आपके physical after marriage is a sawab. So alhamdulillah, this beautiful relationship has to be built with this physical relationship. And of course, as I've explained before, always do dua from Allah subhanahu wa ta'ala that He blesses you with beautiful children who will follow the deen of Islam. The next point that I'm going to discuss about, I have been a woman who has been in many, many circles. And I have seen women sharing relationships or secrets of their relationship. जो husband और wife के बीच में physically होता है, there is a hadith of the Prophet which says that ये जो बातें husband और wife के बीच में होती है should not be shared with anyone else except between the husband and the wife. Now कई बार मजाक मजाक में लोग ये share कर लेते हैं certain secrets that happen between you and your husband in bed is the secrets which have to remain with the husband and wife and should not be shared with anybody else except within yourself. Now, I'm not only saying this that it should be done by the women or it should be done by the men, because you as a couple play a very important role. आप बहुत important हो इन चीजों में और ये follow करना आप दोनों के बीच में है, between the husband and wife, that nor does the husband nor does the wife share what happens between the two of you to the outer circle or between your family members or between any of them unless it is crucial. Because I'm a part of Muslim Matrimonial, I do a lot of counseling to people. Sometimes there are girls or even guys who are not normal, जो अपने physical relationships satisfy नहीं कर सकते, and they watch and wait for some time. When you do not find this happening between the two of you, it is time to bring this to the notice of people who love you, like for example your parents, who have to be told that this relationship is not working out between me and my husband because of this reason. Because I know I was counseling a girl who was having a problem उसके husband के साथ. For 6 months, the man did not touch her. Now, this was a problem with the man. This is when the girl brought it to the notice of her parents, and they had a discussion. They tried to resolve the problem for the next 6 months, where the boy visited the doctors and took care of it. But when it did not get resolved, they had to finish their marriage. उनकी relationship जो था वो टूट गया. That's the reason we recommend that alhamdulillah husband and wife के secrets अपने एक दूसरे के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है. But जब इस point पे आता है कि आप इन चीज़ों को settle नहीं कर सकते एक दूसरे के बीच में, you have to take it to a level where you discuss it with your family members who are very close to you and take their guidance and help. Now, I would just like to share before I take a very small break. हम दुनिया के लिए ड्रेस करते हैं. जब हम बाहर जाते हैं हम बहुत खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, पर जब हम घर पे होते हैं तो हम गंदे नाइटीज में, शलवार कमीज में, स्मेलिंग ऑफ मसालास. सो मेरी एडवाइस है मेरी बहनों को, प्लीज it's important that you dress well, but it's very, very important that you dress even better for your husband and for your family members. So let us be back after a very short break. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Welcome back to my show, खूबसूरत रिश्ते. अब मैंने एक किताब पढ़ी थी which I have to share with you. Men are made in Mars and women are made in Venus. Now, it is a beautiful book which is written by a white author. इसमें उन्होंने काफी अच्छी पॉइंट्स सिखाई थी कि एक मर्द कैसा होना चाहिए, एक औरतों की क्वालिटी क्या है. तो हमने एक उसी तरह हम मुसलमान बोल सकते हैं कि men are from Makkah and women are from Medina. Now, keeping this in mind, मैं आपके साथ में आज क्या शेयर करना चाहती हूँ इस सेगमेंट में. मैं आपके साथ ये बताती हूँ कि जब वो आपका हस्बैंड बनता है, वो बंदा वो आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए.
and वो बंदा आपका lover होना चाहिए, वो आपका he should be a person with whom you can share all secrets of your life. और मैं ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम औरतों के लिए, बिकॉज कई बार हमारी जो दुनिया है becomes around our husband and our family members. So what better combination than having a best friend and a lover at the same time. So मैं आज अपने friend को I will invite a sister of mine who is mashallah very well known in the community. She's a very knowledgeable sister, and she's a teacher of the Quran, and she has been married like me for last 20-30 years, alhamdulillah. So the reason why I'm bringing her on the line is because हमारी जैसी जो sisters हैं जिन्होंने 30 years तक, we are married right now, and our marriages have held up because there are certain things that we have found in our spouses जो हमने अपने husbands में या हमारे spouses में देखे, certain traits. So let us ask this, and this is as a surprise to her, to find out also what are the best traits that you can find in a husband. Okay, this is Sister Shahida with us. Hello. Assalamu alaikum, Sister Shahida. This is Yasmina from Awaz Entertainment. Welcome to my show, Khubsurat Rishte. Yes, Yasmina, how are you? Alaikum assalam. Sister Shahida, I have a very important question to ask, and alhamdulillah, you are a sister who has been teaching the Quran in the community, been a very prominent member of the community. Sister Shahida, I would like to ask you one simple question, because आज मेरी जो topic है, वो है about relationship between husband and wife. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि you have been married for a long. How many years have you been married for, Sister Shahida? 32 years. Mashallah, mashallah, mashallah. And I have been married for 28 years. So I'm just trying to see if our thought process is the same. Do we sync in with, are we on the same page, because we are on the same age of marriage. So मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि what are the 3 things that you have kept your marriage for so long, alhamdulillah, as a trait in your husband, which makes him a good husband for you? I think basically are you on the show right now talking about like Muslim marriages and Correct, things? exactly. Yes, okay. So basically you're looking for 3 traits that a woman should look in a husband. Correct. For in a husband, exactly, right? exactly. So what I would say, Yasmina, is basically if you're looking for the perfect Muslim man who's like a role model, just like Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, in every possible way, then you will never find that kind of a person, right? Absolutely. And if you did, it is unlikely that you will be perfect enough to match him, right? Correct. So we have to be reasonable enough in judging a person, right? Correct. So we see every Muslim woman who seeks marriage in Islam should be aware that she is seeking a person to not only be a husband or a friend or a life partner and all those good things that we look for, right? But you are also basically seeking someone to be like the imam or leader of your home and the family. Mashallah, right? beautiful. So, yeah. So, of course, you want him to be kind, generous, patient, good-natured, healthy, attractive to you, and God-fearing, all those, things that reasonably a woman will look for in a man, right? Very true, very true. But nevertheless, as a woman, you need to be clear about what you really want to seek in marriage. Very true. Sometimes all of us have different preferences in life and different way of looking at things. So for me, I would say the first thing that I would look for is a religious commitment from the man, right? Mashallah. So this doesn't mean that a thick beard and a person who's attending all the salahs in masajids and following all the pillars. That is, going a little bit further into like looking for a potential husband's piety, right? Very true. Basically, what we need to look for in the beginning is, does he pray his daily prayers?
right? Is his zakat in order? Like, does he pay zakat? Beautiful. Basic things, right? And does he read Quran? Very true. Does he know how to read Quran? And does he believe in all those pillars of Iman and all those things? So, and not only that, we have to question ourselves as well. Do we practice the same level with the same belief Very true, that Sister we are Shahida. expecting from him? Right? Very true, Sister Shahida. Yeah. It's not, how can we expect it from him? Right? Because the Prophet ﷺ, he said in a hadith that if someone with whose piety or piousness and character you're satisfied comes to you, then marry him. Very true. Right? If you do not do so, then there will be disorder in the community. But so sister, this is one thing that we look at as a generation, which is our generation. But now, if a younger generation looks at it from the younger point of view, would these things apply in the same manner to the younger generation? Younger generation, I would say at least, religious commitment is something that you have to have as a priority. But the other things we can look at the way things have changed nowadays, and because of social media and other things, right? So, but looking at the piety of the person, not to that level where, we can compare it to a very pious person, but to an extent where at least he's a practicing Muslim. Absolutely. Right? Beautiful. So, yeah. And then the second most important thing I would advise is looking for good manners or akhlaq from that person. Beautiful. Right? Very nice. So, someone with a good nature and good akhlaq or manners will naturally treat his partner well, right? Very true. So the Prophet ﷺ also, he mentioned in his hadith that if you find a boy or a girl whose akhlaq and manners and ethics is good and who follows the faith properly, give your daughter in marriage to him. Right? Beautiful, very nice. If matches are made without considering these aspects, then it might cause, disturbance in the Islamic society. Like that's what I mentioned that in the previous point as well. And then the first measure of a man's character is how he treats people around him, right? So you have to observe how he is with others. Does he treat his parents well with respect? Like, I don't know if I'm giving the right point. Yeah, you're very true. Yeah. Yes. And you have to note how he interacts with different people, and sometimes we have certain measures set up, like how you want your husband to be. So you have to see if he has those qualities in him. Very true, sister. Very true. Like honesty and whether what the language that he speaks, whether it's shown in his actions or not, or you have to watch out for any red flags which may point to his bad temper. Like if you're a person who cannot take somebody who's rude to you, then you have to, make sure these qualities are there, because these are the things that bring two people together, like having same kind of akhlaq and same kind of thinking. Very true, sister. And then very another point I would mention here is to see if you have shared values, right? Like having a common purpose or goal. This definitely ensures a couple. Yeah, Sister Shahida, I totally agree with you. Like having a hobby, and I know how you like to travel, and your husband loves to travel together. Yeah. So it is what you're looking for. Like if you're a person who does a lot of gardening and you want your husband also to join you in that, those kind of values that you're looking for in your husband. This is where it is. You need to be honest to yourself, right? Beautiful. So to look for what you want to look for in your potential mate, and basically,
as a woman, we all will be primary caregivers of our children, right? For Correct, future correct, generations. correct. So, do you expect your husband to spend a lot of time with the family, or are you content with him just providing you? So these are some questions that you need to ask yourself, right? Are you a person who loves traveling, like how you mentioned, and do you expect him also to do that along with you, like? And do you like to entertain guests regularly or not? You know, sometimes you might be a very social person and you want your husband also to mix with your friends and all those things, right? Yes, very true. So, Thank you, Sister Shahida. Our time has come to an end. Loved having you today with us. Yeah, and just I want to end up here that there is no such thing as a perfect marriage. And Excellent. There are no perfect men. I agree with you. There are no perfect women, right? Exactly. So try to choose someone in whom the good qualities outweigh the bad. And Well, Allah knows that. very good, very good. And thank you so much for telling that there is no perfect match, because people are becoming at the age of 30, 35 and they're still looking for perfect matches, you know. That's the reason, subhanAllah, it is becoming so difficult in the community to settle the children, because they are looking for perfection in the other person. They themselves are not perfect, but they're looking for perfection. So you have to look for good qualities that outweigh the bad ones. Absolutely. That's what you'll have to, because none of us can be perfect, right? Very true. So, thank you so much, Sister Shahida. Thank you so much for coming on our show. And inshallah, we will be coming physically, inshallah. Yeah. Have a good day. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bye-bye. Walaikum Bye-bye. assalam. And mashallah, that was Sister Shahida with us. And as you can see, उन्होंने बताया कि क्या important होता है, क्या traits होते हैं, important होते हैं husband and wife के बीच में. But now it's my time to give you some very important tips. So, कई बार ऐसा होता है कि हम औरतें अपने मर्दों को इतने लाइफ में मिक्स करके रख देती है कि वो मर्द को अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता. Now what do I mean, मेरी sisters? Keep a very very sharp eye. बिकॉज यहाँ पे कई बार होता है कि कोई मर्द को पसंद आता है गोल्फ करना, कोई मर्द को पसंद आता है गार्डनिंग करना, कोई मर्द को पसंद आता है जिम करना. तो इफ यू वांट टू कीप योर मैरिज गोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह माय डियर सिस्टर्स, एनकरेज योर मैन, अपने हस्बैंड को एनकरेज करो कि ही टेक्स अप वन हॉबी व्हिच ही लव्स टू डू, एंड दिस विल गिव हिम टाइम फॉर हिमसेल्फ. ना यहाँ पे आप थोड़े सेल्फिश भी हो सकते हो. आप ये बोल सकते हो कि ओके, अगर वो जिम में जा रहा है तो आप भी अपने आप को थोड़ा टाइम दे दो. आप एक छोटी सी हॉबी ले लो जो आप हमेशा चाहते थे करना. जैसा कि फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग सीखना चाहते थे, आप स्विमिंग करने चले जाओ. अगर आप स्पा में जाना चाहते हैं, आप स्पा कर लो. या तो आप कोई फ्रेंड को विजिट करना चाहते थे, वो कर लो. आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करना चाहते थे, आप उसमें इंक्लूड हो जाओ. सो दिस इज अनदर टिप दैट आई एम गिविंग यू. इफ योर मैन, अगर आपके हस्बैंड को कोई हॉबी पसंद आती है, लेट हिम गो आफ्टर हिज हॉबी सो दैट he gets some time for himself and you get time for yourself. This is a very important part of marriage. Men learn from their fathers. Always remember, men are very different from women. We women watch our mothers at home and we learn. मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, मेरे को खुद को कुकिंग नहीं आती थी, मेरे को पकाने नहीं आता था, बिकॉज मेरी मदर ने मेरे को कभी पकाने नहीं सिखाया. लेकिन एज आई वॉज ग्रोइंग अप, मैं हमेशा देखती थी कि मेरी माँ क्या करती है. पहले बघारती थी, फिर उसमें मसाले डालती थी, फिर उसमें ऐड करती थी. एंड आई यूज्ड टू कीप इट इन माय माइंड कि इस तरह खाना बनता है. एंड मेन आर द सेम. मेन अपने फादर को नोट करते हैं. सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखें. अगर आप अपनी औलाद के लिए नॉट द राइट रोल मॉडल, योर चिल्ड्रन विल बिकम एग्जैक्टली लाइक यू. तो मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि अपने बच्चों के सामने अपनी वाइफ के लिए प्यार बताओ. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन होल्डिंग योर वाइफ, होल्डिंग हर हैंड्स, sitting with her together to watch TV, going out with her for dinner. इन चीजों में कोई गुनाह नहीं है. Show this love to your wife so that your son become loving towards his wife. So the son always follows the father. Now, next point to remember is men let go faster. बहुत आसानी से. अब समझो कि वो एक husband and wife में झगड़ा हो जाता है. एक मर्द अपने दिमाग से वो negative feelings बहुत जल्दी निकाल लेता है, भूल जाता है. He forgets it and then he'll come and talk to you very easily. But हम औरतें इन चीजों को दिमाग में रखती हैं and वो पॉइंट फिर हम बार बार दोहराते रहते हैं. हम अपने हस्बैंड्स को ताना देते हैं.
ये ताना देना छोड़ दो, that is not good. बिकॉज मर्द क्या होता है कि वो भूल जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह आप औरतें भी ये अपना लो कि हम भूल जाएंगे एंड लेट्स मूव इन लाइफ. डू नॉट रिमेंबर दीज पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स इन लाइफ. ब्रिंग पॉजिटिव इनटू योर लाइफ एंड इंशाअल्लाह योर मैरिजेस विल बी मच मोर सक्सेसफुल. इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि एक मर्द को अगर आप ना इनडायरेक्टली कुछ बोलेंगे ना, वो नहीं समझेगा. इनडायरेक्टली एक मर्द को ताना देते हैं ना जो औरतें, ये बहुत गलत होता है बिकॉज वो मर्दों को क्यूज नहीं मिलते. लेकिन एक औरत को आप उसी तरह से ताना दे दो, वो बहुत जल्दी आपका क्यू पिकअप कर लेती है. सो दीज आर कॉल्ड इन इंग्लिश गिविंग सटल क्यूज टू योर हस्बैंड. ये हस्बैंड्स आपके सटल क्यूज नहीं समझेंगे. सो हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर हस्बैंड. आप उनके साथ बैठो, अपनी फीलिंग्स समझाओ, आपको क्या फील हो रहा है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन वर्क आउट योर रिलेशनशिप्स much better than what you had previously. ये बहुत अच्छी बात है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करने वाली हूँ. And this is showing appreciation to your husband. हम औरतें खुद एक्सपेक्ट करती है कि हमारे हस्बैंड्स हमारे को अप्रिशिएट करेंगे हमारे कपड़े पे, हमारे ड्रेस पे. बट हम कितनी औरतें अपने हस्बैंड्स को एक्चुअली अप्रिशिएट करती है कि वाह यू आर लुकिंग नाइस टुडे, दिस ड्रेस सूट्स यू, ये कलर आप पे बहुत सूट होता है. तो प्लीज मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स दैट you appreciate your husbands and help them choose colors which look very good on him. So inshallah we'll be back very quick after a very short break. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and welcome back to Khoobsurat Rishte and I'm Yasmina. Now मैंने आपको already 8 points दे चुकी हूँ, but this is one of the most important points that you should remember. For men, sex is very important. Now ये एक जनरल फीलिंग होती है हर कम्युनिटी मेंबर में कि मर्द गिव्स इम्पोर्टेंट टू सेक्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप. एंड हम औरतें बहुत इमोशनल होती हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर अ वुमन टू हैव अ पार्टनर. बट अल्हम्दुलिल्लाह द सेक्स और द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ देम हैज टू बी विन विन, जहां पे आप दोनों अपने रिलेशनशिप से खुश हो. सो ऑफ कोर्स sex is important part of a marriage. Now I would like to come that कई बार मैंने आपको समझाया men are very happy to please their wives in this relationship. कई बार हम औरतें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती अपने हस्बैंड्स के सामने कि आपको क्या प्लीज करता है when you are in a relationship with your husband. And it is very important कि आप अपने हस्बैंड्स को समझाएं, talk to them कि मेरे को ये नहीं पसंद है, मेरे को ये पसंद है, आप प्लीज ये करें. So this beautiful relationship of love that you have got, the romance that you have got will be enhanced and your marriages will last longer if you are able to communicate with your husband. And of course your husband is always happy to please you, my dear sisters, that what you like and what you don't like in this relationship, physical relationship of yours. So but remember, importance of physical relationship, but do it without hurting your husband's ego. मैं ये बात क्यों आपको बता रही हूँ my dear sisters? क्योंकि एक मर्द का ईगो बहुत बड़ा होता है. अल्हम्दुलिल्लाह, especially when it comes to his wife. आप उसकी वाइफ की बुराई करो, it really hurts him. तो वो वाइफ जो उसके लिए इतनी अहमियत रखती है, it's very important कि वो वाइफ उसकी रिस्पेक्ट करें. And Islam makes it very important for women that you respect your husband. But जब मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि आप अपने husband से बात करें and explain to him what you like in your relationship, please make sure that you do it without hurting their egos. Because for a man, his ego is the most important. So I've now covered 10 points. Now, एक सबसे बड़ी गलती एक मर्द करता है is he tries to fix his wife. So remember the next point. Do not try to fix your wife. Because वो बोलते हैं ना कि Allah subhanahu, there's a hadith of the Prophet which says कि the woman is made from the rib of the man. Now इसमें मतलब ये होता है कि basically जब आप उनको ज़्यादा stretch करते हो तो वो टूट जाती हैं. So ये stretch करने की कोशिश ना करें. आप remember करें कि ये husband and wife का जो relationship है is a win-win relationship. तो आप उनको फिक्स ना करें. शी इज नॉट अ प्रॉब्लम.
आप उनके फ्रेंड बने और उनको हेल्प करें। एक मर्द का जनरल एटीट्यूड ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरे को सोल्यूशन ढूंढना है। This is a regular thing that a man does. कुछ प्रॉब्लम हुई, I have to find a solution. He is a solution finder for the family. So remember, my dear friends, कि ये वाइफ जो आपकी है, she is not a problem. Don't try to fix her problems. एक औरत के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड हर। तो अगर वो वाइफ आपकी बार बार आपसे बात कर रही है, नॉडिंग और कीपिंग इन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब उनकी बात सुनते हो तो इट शोज दैट यू आर केयरिंग फॉर हर। So please make sure that when your wife talks to you, you show her that you care for her. Now, the next point that I'm going to connect with you is on connections. For a woman, before she gets into a physical relationship with her man, it is very important she connects with him. Now, what I mean by connection is physical hone se pehle a mental connection or a spiritual connection is very important. Jaise ab aapne suna Sister Shahida say, what are the points that you look for in your husband? एंड अगर आपको फाइंड होता है कि ये हस्बैंड की ये हॉबी है, एंड यू कैन कनेक्ट विद दैट पॉइंट ऑफ योर हस्बैंड्स हॉबी, और द हस्बैंड कैन कनेक्ट विद द पॉइंट ऑफ हिज वाइफ्स हॉबी, अल्हम्दुलिल्लाह यू वुड मेक अ वेरी गुड कपल। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू बी अ एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मैं आपको बताऊं कि मेरी हॉबी अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव टू राइड बाइक्स। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हिजाबी सिस्टर जो आपके सामने बैठी है, ये बाइक्स चलाती है, राइट? बट अल्हम्दुलिल्लाह आई लव टू राइड बाइक्स। I have done parasailing. पता है शूट पे आप प्लेन में बैठते हो और पैराशूट से आप नीचे आते हो। I love adventure activities. I love going for trailing, trekking. But अगर मेरा हस्बैंड मेरा इस चीज में साथ ना दे तो I would have to do these activities alone. And alhamdulillah, I am very blessed that मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरे को encourage किया है to get involved in these activities. So, mashallah, I go swimming, I go trekking, I go hiking, parasailing, parajumping, biking, cycling, everything, because that is what I am as a person. So if you can find that in the man or the woman that you're connected with, it will help you to grow as people and as best friends. Another very important point to remember, when you are talking to your spouse, always look the person in the eye. The eye to eye contact is very important. Because एक बात है, जब आप eye to eye contact करते हो अपने spouse के साथ, you are showing honesty and sincerity in your relationship. Make your conversations very deep. कि आप सिर्फ घर में आए, सलाम वालेकुम किया, अपने बेडरूम में चले गए. No. When you are also in your bedroom, have deeper conversations with your wife. Make romance beautiful for both of you so that your relationship lasts for next 20, 30, 50 years. Have dreams together. Now, physical relationships are important for men. Emotional relationships are important for women. Have a common for hobby so that you are the best friend to your husband. And listen to your wives because women love men who listen to them. Now, if you would like to be a part of my program, please make sure you join us in our, just give me a call or give me a call on my phone number 647-855-8050 so that I can invite you as a guest to my show. If you would like to sponsor or advertise my show, please connect with us on Awaz Entertainment. My last point, this is a beautiful book which you all need to read. It's called Don't Be Sad. Life is beautiful and it should be read by men and women. And if you want to procure a copy, you can message me on 647-855-8050 and I will show you how to get this copy for yourself. Assalamu alaikum and see you for the next show on Khubsurat Rishte.